Congratulations, Bhaiya and Bobby, for the wedding. All your friends were not able to attend this wedding, and you guys were not happy about that. So I have planned this surprise for you. Hi Devansh, many congratulations to you. I am so happy that you're getting married because जैसे अपने लखन है अपन बहुत खुशकिस्मत है कि अपनी शादी हो रही है. And Astha, all the best to you because you're getting married to this fellow. I hope you guys will do well. Stay happy, stay safe, take care. हाँ भाई विंदनी शादी कर रही है फाइनली. हाँ, सो मिस्टर एंड मिसेस बजाज, दिस मैसेज इज़ फॉर यू गाइस. हैड अ ग्रेट वन. आप शादी पता है कैसी हो रही है, पर कुछ कर नहीं सकते अपन लोग. बहुत मन तक एंजॉय करेंगे शादी को बट अनफॉर्चुनेटली अच्छा है, भीड़ भाड़ नहीं रहेगी, कम भीड़ में तुम्हारी शादी हो जाएगी अच्छे से. बट मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, एन्जॉय करो यार. एंड हैड अ ग्रेट वन आफ्टर दिस. आई होप यू गाइज विल हैव लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस एंड एवरीथिंग. एंड थोड़ा सा दिखाओ यार राजस्थानी कल्चर, थोड़ा सा अपना दाल बाटी लहसुन की चटनी खिलाओ, आग लगाओ, ड्रैगन बनाओ इनको भी थोड़ा सा कल्चर अडेप्ट करें इनका भी और इनको भी सिखाएं. सो दैट्स इट गाइज. विश यू बोथ अ वेरी wish you both a very happy life ahead and best of luck for a new beginning and that's it. मिलते रहेंगे भाई, मिलेंगे जल्दी, मिलेंगे और जल्दी कुछ प्लान करेंगे. आपकी शादी का जो स्किप हो गया तो उसको तो भूलेंगे नहीं भाई, वो तो ज़रूरी है ना. मुझे लग रहा है मेरी शादी लास्ट हुई थी जिसमें अपन ने सब मिल के अच्छे से किया था. बाकी सब शादियों में हम लोग आधे पार्ट एंड पार्शल इधर उधर कहीं ना कहीं थे. बट अब मयंक की लास्ट है, सो होपफुली जब भी कुछ ना कुछ हो जाएगा तो लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक गाइस. सी यू सून. कॉन्ग्रेचुलेशंस देवांश एंड आस्था फॉर गेटिंग मैरिड. बहुत बधाई हो ब्रो एंड आई एम ग्लैड यू टुक दिस डिसीजन एंड थिंग्स विल गो स्मूथ. बाकी तो तुझे पता ही है अंशुल और दानिश कितने खुश हैं, तो आई होप यू ऑल्सो हैव द फन इन योर लाइफ. एंड अंकल आंटी विनी सबको बहुत बहुत बधाइयाँ. एंजॉय योर डे एंड वंस ऑल दिस इज ओवर विल मीट एंड सेलिब्रेट. टेक केयर. Congratulations, mere bhai. May your marriage be filled with blessings and happiness. May you both achieve all the success in life, and the smiles may last forever. I'm sending you all the luck and years of togetherness. Stay home, and we will meet soon. Congratulations once again, mere bhai. Lots of love. हाय भाभी. भाई यार तेरी शादी की बहुत प्लानिंग कर रखी थी, डांस वांस सबका प्रोग्राम था, बट हम नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट. बट भाई बहुत बहुत बधाई शादी की. विश यू वेरी वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ अहेड ब्रो. और पार्टी जो है तो हम ना शादी के बाद लेंगे आप दोनों से. ओके चलो बाय. नमस्कार मिस्टर और मिसेस मेहता, आपकी शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ. दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ. और मैंने तुम लोग के वेडिंग गिफ्ट के तौर पे शिनचैन डांस भी प्रिपेयर किया था, बट श्रेयस ने मना कर दिया. आने के बाद हम वो सब भी कर लेंगे. अभी आप एंजॉय करो. बाय. हैप्पी मैरिड लाइफ. हेलो देवू एंड आस्था, शादी की दोनों को बहुत बहुत बधाइयाँ. काश मैं अटेंड कर पाता यार शादी, बट अनफॉर्चुनेटली वी कांट. We'll wait for you guys to be back and we'll have a good celebration here. So once again wish you guys very happy married life in advance and be safe and enjoy. many congratulations आस्था देवांश. मिस यू. इतनी सारी प्लानिंग की थी बट सब बेकार हो गई कोरोना की वजह से. बट कोई नहीं, हम वीडियो कॉल से तुम्हारी शादी देखेंगे. सो एंजॉय, स्टे सेफ और हमेशा ऐसे ही साथ मिल के रहो, खुश रहो और एक दूसरे का साथ देते रहना. लव यू, मिस यू. Congratulations guys. Sorry we couldn't make it as we know. कोई ना, तुम लोग जल्दी आ जाओ, फिर हम पार्टी करते हैं. Cheers. Bye bye guys. Hi Devansh, hi Astha. Congratulations on your wedding and wish you all the happiness. And finally, welcome to the club. Congrats for your big day, brother. It seems as if it was just yesterday that we all thought of going for a road trip with your half-shaved head
and passed out Diwali. I still remember the first time we met. I was having a random jam with Shreyas, almost past Roxy's bedtime. I don't know whether you still have my name saved in your phone as Rizwa Guitar, but I honestly never thought we'll come this far. The journey of our friendship has always taught how important it is to experience life through our own eyes in order to appreciate its true beauty and to live each moment to its fullest, irrespective of what lives we live or what roles we play. I cherish all the times we spent together with our back, including all the frantic situations and the innumerable empathies that we shared for each other. We were a family, like apart from our families, always standing out for each other. Now, as you guys enter a new phase of your life, I wish you guys a lifetime of love and tons of happiness. Stay safe, stay healthy, and for you, Asta, you found a gem. Do hold on to it. Adios. Hi Asta, hi Debu. Many congratulations on your marriage. I wish we could have been there, but that's fine. जान है तो जान है और बहुत बधाइयाँ। और ऐसा है कि भाभी जी हमारा सप्रेम भेंट नीचे आप ये देवू के लिए है। ओके बाय गाइस। Hi, this is literally my 100th message, and I hope this is the last one because everyone around me in the house is done, like they're done with it. And before I start with my message for you, just a disclaimer: if I end up getting emotional or I end up sobbing, then that's on you. That's completely on you. I think पिछले 6-7 days से I've known that I have to make this video. In general, when you tell people to make a video, they're like, अच्छा, what will we talk about? Okay, हाँ, सिर्फ इतना ही बोलते हैं, ये बोलते हैं, नहीं ऐसा. The thing is, here, I know what to talk about. I have too much to talk about. The problem is that, the thing is, if somebody tomorrow asks me, like not tomorrow, like for this video in fact, to talk about Astha, I can write a thesis. Like it's a never-ending subject for me. So my problem is where to start. Should I talk about the KV phase, जो typical हमारा suit वाला uniform था, and Astha की प्यारी सी mustache थी, and then she had those good, that college phase where we thought we were fashionable in life, but we were anything but fashionable. Or when we were just starting out as working professionals and adulting in life. Or this phase where Astha is in a very zen and a content mode, because because you are getting married. So yeah, touch wood. But yeah, but in all honesty, all phases aside, I am really happy for you and Devansh both. Hi Devansh. I love you guys, and I can't wait to meet you and ring that doorbell of your house continuously to a point where Devansh decides to disown me and gets irritated to another level. So I'm definitely going to do that. That's one of my agendas for sure when we meet next. I wish you all the happiness. I wish you both all the happiness, all the love, all the excitement, all the fun things possible in the world for your next chapter. Spoken like a true Punjabi auntie. And I really don't have words. Like I'm so happy for you guys. And I think हमारा पिछले साल का WhatsApp conversation is a proof for that, where I'm just sending dance emoticons and touch wood everywhere possible. The only thing that I wish is that I could be there. Not just I, like in general, all of us
could be there with you guys on a special day. But ठीक है, physically नहीं, but virtually तो we are definitely going to be there. Wouldn't miss it. And once things become better and you know they're in place and they're proper, I'll be there within no time again to spend time with none other than Devansh, my Jiju. I can't believe I just said that out loud, but yeah. I really miss you, Astha, and I really, really, sincerely wish that I could be there. I'm sorry that I can't and I'm not. Yeah, congratulations if I've not already said it like a number of times. I love you guys, and be happy and stay safe. I don't just, you know, every message these days have like stay safe, so stay safe. Bye. To the one person in this world who understands me, hey Astha, kaisi hai? Well, you know I am bad at this stuff, talking about emotions and specifically talking about the people I love and what I feel about them. Astha, you have been the best grandma in this world and no one can take that title away from you. Yeah. And thank you for all the time you stood beside me and तूने समझा कि मैं like okay मैं बात नहीं कर पाता था तो like you understood me and you stood beside me and accompanied me in many battles of my life. Thank you for that, and I am so grateful that there is a guy or a girl, specifically a girl, who जो मेरे को समझती है बिना मैं कि मेरे कुछ कहे, like you understand, just I don't have to speak anything. Thank you for that. I'm so happy, genuinely happy for you getting married, and yeah, cheers to that. Yeah. हाय ब्रो, धोखा दे दिया तूने मेरे को, है ना। सबसे पहले ग्रुप में शादी किसकी होनी थी? मेरी होनी थी, मेरी। ठीक है, पता नहीं कहाँ से अचानक से तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस ये है, ट्राई है आने का शादी में, अगर पॉसिबल हो पाए तो। नहीं हो पाएगा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली रिसेप्शन रखना ज़रूर, हम लोग आएंगे। और हमारे होने वाले जीजा क्या जान मत खाइयो, ठीक है। वो बंदा है यार, तो वो सीधा साधा बंदा है, हैं? अच्छे से रखियो। कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन यार, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। माय डियरेस्ट सीमा मैम की बेटी, टुडे व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड, आई रियली विश आई कुड हैव बीन देयर। लेकिन कोई बात नहीं, हम वर्चुअली तो साथ में हैं। आई रियली होप एंड विश दैट यू गाइज enjoy this day to your fullest, because these are the times that you will cherish for the rest of your life. And I pray God कि देवांश को थोड़ी सी strength मिले आस्था की सारी गर्लफ्रेंड्स को झेलने के लिए। And आस्था, I just wish that you guys stay happy forever. एक बहुत ही महान व्यक्ति ने वैसे कहा है कि प्यार दोस्ती है। And when I see you two, I really realize that love is friendship. I just feel happy, and congratulations once again. I miss you and I love you a lot. No words. I can only say as that TVF का scoop videos. I'm stuck. I'll give a very human response to it. So thank you everyone for this video, and now I know तुम लोग क्या कर रहे थे, जो मुझे कह रहे हो कि बार बार विनी से कब बात कर रहे हम and all of that. Now I know what that is all about. But I really missed all of you, even Devansh के दोस्त. I have heard so much about you. Not the Bangalore people, okay, I've met all of them. I
I mean Anshul, Danish, Mayank, Jay, everyone, Raja. So really dying to meet you guys. I hope कि हम जल्द ही मिल पाए. जो लोग उदयपुर में प्लीज़ ट्राई करना ना, से थोड़ा सा अपन इधर उधर से कहीं से मिल लें. That will be amazing. And once again, you guys were missed, but thank you for being on the Google Meet. On off ही सही, but I'm very happy you guys were there at least. और I hope आपको हमारा बूगी अच्छा लगा आज का. But jokes apart, we really wish you guys were here. Devansh does not know how to give a human response, इसीलिए अब मैं आई हूँ. So yup, we'll see you all very soon.